What a scintillating knock then by Fakhr Zaman. It's two back-to-back hundreds. In fact, three back-to-back hundreds for him. And the winning runs obviously were hit in the end. Babar Azam also amongst the celebrations. Overall, it was a fabulous performance by Pakistan. Hello and welcome to the Solar Energy Inverex Pitside Show, and huge congratulations to Pakistan because they've won another game of cricket. They won the first one-day international. They've backed it up with a fabulous performance in this one because this was not an easy chase at all. To be able to chase that down, you needed stability at the top, and that's what we got in the form of this man on my left, Fakhr Zaman, who joins us on the show alongside Sana Mir. Fakhr, thank you so much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो हमने देखा है कि आप you have this ability to score these hundreds. ODI करियर माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन आप हमेशा लंबा स्कोर करते हैं. एक दफ़ा जब आप इनको देखो कि फॉर्म में आते हैं तो ऐसे नहीं लगता जिस तरह कि कभी 50 से यू आर सैटिस्फाइड. तो आई वांट टू नो अबाउट योर कन्वर्जन रेट कि जब आप 50 पे आ जाते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि मैंने अब 100 करना है, या अपनी इनिंग्स को कैसे प्लान करते हैं? नहीं, सही बताऊं मैं तो सोचता ही नहीं हूं कि मैं अभी 100 पे जाना है. मैं कोशिश करता हूं कि अपनी नेचुरल गेम खेलूं, लेकिन वही होता है कि अगर आप 80 स्कोर कर लेते हो उसके बाद आप माइंड में आता है कि मैं अभी बड़े शॉट्स नहीं खेलूंगा और क्रिकेटिंग शॉट से ही रन बनाऊंगा. तो मेरी यही है कि अगर वनडे मैच हो उसमें आपके पास, क्योंकि वनडे में T20 की तरह भी खेल सकते हैं, टेस्ट की तरह भी खेल सकते हैं, इसमें आपके पास टाइम होता है. और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वनडे में लंबा खेलूं, और इसीलिए मेरा ये फेवरेट फॉर्मेट भी है. ये फेवरेट फॉर्मेट भी है, और फेवरेट फॉर्मेट में सना इनके बहुत सारे जैसे कहते हैं रन्स भी हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. बट we've seen him score not just in Pakistan. मैंने इसके बारे में बोला भी था कि साउथ अफ्रीका में भी इनकी एक बहुत अच्छी इनिंग्स थी in this particular format that I'm sure a lot of people remember. And जितनी भी इनकी इनिंग्स हैं अगर देखा जाए, he scored at all the special occasions. So would you consider him a big match player? That's what I'm trying to ask. एक तो बिग मैच प्लेयर है, और हम आपस में बात भी कर रहे थे, ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि इनके रन्स की सबसे अच्छी बात ये कि वो हमेशा टीम के लिए होते हैं. अगर 100 किया भी है तो 125 के स्ट्राइक रेट पे उस वक्त किया जहां आप 330 रन चेस करने जा रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट पे नहीं किया. तो सबसे ज़बरदस्त बात इनके रन्स की यही है, इसीलिए इम्पैक्ट प्लेयर है, और मेरे हिसाब से इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है इस टीम के लिए, क्योंकि जहाँ पे रन बॉल करने वाले भी प्लेयर्स हैं वहाँ पर इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जो भी 300 रन से बड़े चेजेस हैं में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है. 80 का एवरेज रहा है, मतलब इट्स समथिंग एक्सेप्शनल. और सर विवियन जैसे प्लेयर्स का रिकॉर्ड तोड़े हैं, एबी डिविलियर्स के करीब पहुंच रहे, जो उनकी आइडियल भी हैं. तो आई थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, और माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है देख के जिस तरह से ये खेल रहे हैं. बिल्कुल, इस चेज में पाकिस्तान को एक पार्टनरशिप चाहिए थी. एट द टॉप दे नीडेड one big 100 and they got that in the form of Fakhr Zaman. He's also our hero of the match. Hero of the match, brought to you by Inverex Solar Energy. Yeah, just a brilliant knock by Fakhr. Sara, what did you like about his innings? I think what I loved about his innings, both runs on offside and on leg side, and it was not one release shot on the leg side, but dispatching the bad balls and some death touches as well. It was a mixture of strength, and it was a mixture of timing. Hero of the match, brought to you by Inverex Solar Energy. अच्छा फखर, एक और चीज़ जो आपकी बड़ी स्टैंड आउट हुई है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दैट वी हैव सीन, स्पिनर्स को भी बहुत एंजॉय करते हैं खेलना. अभी जिस तरह से इन्होंने इश सोदी को यू सॉर्ट ऑफ टुक हिम ऑन, एंड जनरली आई मीन कैसी उनके खिलाफ कैसी अप्रोच होती है? वही यू स्टिक टू योर सेम गेम? देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हामियाँ होती है, और तभी आपको टाइम लगता है अपने ऊपर काम करने का, क्योंकि टीमें दूसरा आपके लिए ज़रूर प्लान करती है कि ये किस तरह खेलते हैं, कौन सी जगह इनकी कमज़ोर है, कौन सी जगह अच्छा खेलते हैं. तो मैंने भी अपने ऊपर काम किया है और कर भी रहा हूँ. तो बस यही है. किस एरिया पे काम किया? आपने कहा काम किया, किस एरिया पे? एक चीज जो मैं भी पूछना चाहूंगी, बहुत अच्छी जो एक चीज नजर आई वो स्ट्राइक रोटेशन थी, कि एक बड़ी हिट के बाद आपने फौरन स्ट्राइक रोटेट की. ये बहुत इंटेंशनली कर रहे थे या मतलब नहीं? ये बाबर ही करवा रहा था. बाबर हर ओवर के बाद मैसेज भिजवा रहा था कि भाई
खड़े रहो, मारना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक ओवर ले लेता हूँ तो फिर चला जाऊँ। तो बाबर, और जब मेरे साथ बैटिंग भी कर रहा था तो तब भी उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाई अभी रन्स पे जाना है, वो मुझे ये कह रहा था कि भाई बस आप सिंगल डबल करो, अगर रिस्क लेना है तो मैं ही लूँगा, तो आप बस लंबा जाओ, क्योंकि अगर आप खड़े हुए हो तो वो लोग लेफ्ट हाफ स्पिनर को भी उस तरह नहीं बॉलिंग करवा रहे थे, और ये वो कह रहे थे कि आप किसी भी टाइम रन कर सकते हो। तो बस यही है, और ये अच्छा है, टीम के लिए भी अच्छा है कि अगर आप प्लान से, क्योंकि इतने अगर 350 तक अगर आप रन चेंज कर रहे हो तो इसके लिए प्लान्स भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसीलिए ऐसे लग रहा था, मुझे लग रहा है आपने बाबर की सुनी तो इसीलिए शायद बाबर भी आपके लिए ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे जब आपने वो 100 की, तो एक जेन्युइन खुशी उनकी साइड से भी नजर आई, एज इफ ही इज रियली रियली हैप्पी फॉर यू, एंड यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू टुक दैट रन। तो ये सेलिब्रेशन आप देखें, ऐसे लग रहा है जिस तरह के इन्होंने खुद 100 की। बिल्कुल, और मैं सही बताऊं, मैं अंपायर को भी मैं ये कह रहा था कि जब मैं पिछले मैच में भी 80 पे था तो मैं अंपायर को कह रहा था कि अगर बाबर मेरे साथ ना बैटिंग करता तो अभी या तो मेरा 100 हो चुका होता और या मैं ड्रेसिंग रूम में होता। So he brings a sense of calmness then, you know, when you're talking about बाबर, उनकी एक क्वालिटी है कि वो एक obviously as a captain, as a leader, वो आपको बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। क्या यही उनका रोल रहा है आप जब whenever you've been batting together? बिल्कुल, वो हमेशा वो तो आप सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा बैट्समैन है, और जो उनका माइंड सेट है वो बहुत अलग है दूसरे प्लेयरों से। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते, ख्वाह अगर रन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा रहा हो, क्योंकि मैंने उससे बात भी की कि अगर 7 से ऊपर एवरेज जाएगा तो मैं रिस्क लूँगा, आप मुझे जो भी बोलो। तब भी वो मुझे कह रहा था कि नहीं अभी आप मुझे जो भी बोलो, मैं 7 के एवरेज से ऊपर जाएगा तो नहीं, मैं क्योंकि देखें क्रिकेट में हर प्लेयर का अपना रोल होता है। तो मेरा इमाम भी जब जाते हैं तो मेरा रोल होता है कि मैं थोड़ा सा तेज खेलूँ। बाबर के साथ भी फिर मेरा ये होता है, तो मैं बाबर को भी यही कह रहा था कि अगर एवरेज 7 से ऊपर जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि 7 से ऊपर जाए एवरेज। तो तब भी बाबर मुझे कह रहा था कि नहीं अभी आप काम रहो और ये रन चेज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं इस विकेट पे। अच्छा, बाबर तो आपको sort of जिसे कहते हैं ना सपोर्ट करता है, आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता है कि यू नो हाउ टू अप्रोच द टारगेट। इमाम क्या करते हैं? बिकॉज इमाम इज समबडी जिसके साथ अच्छी मतलब आपकी पार्टनरशिप्स रही हैं। यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो यहाँ वनडे सीरीज हुई थी, फिर उसके बाद भी, एंड आई नो कि आपने काफी इसके बारे में बात भी की है, बट उनके साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप होगी ना आपकी? बहुत डिफरेंट है, और इमाम बाबर का बिल्कुल उल्टा है। वो ना कुछ बोलता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आती। कॉलिंग भी करते हैं ना, मतलब हमारी एक हम लोग बस काफ़ी अरसे से ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह बना हुआ है कि मतलब कॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग देख के ही भाग जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो कभी कभार खुद भी कॉल नहीं करता, तो वो इमाम जो है ना वो चेंज होता रहता है उसको। लेकिन ये है कि मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा करता हूँ उसके साथ, क्योंकि वो जिस तरीके से जितना कॉन्फिडेंट वो खेलता है इमाम, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें। सबसे ज़्यादा गाइडेंस किससे मिलती है? कोई ऐसा? मेरी अम्मी से। अम्मी से? मेरी अम्मी से। जब वो क्या कहती है? जब मारते हुए आउट हो जाओ तो कहती है कि नीचे खेला करो यार, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हो। जब नीचे खेलते हुए बंदा आउट हो जाए कहते तो मारा करो ना। पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं ना, किसी हाल में कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है उनको, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, क्योंकि हम फखर जमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और रिकॉर्ड्स में फीचर भी हुए हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट अटैक। Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. All right, you talk about the fewest innings to 3,000 runs, and Fakhar Zaman is right on that number 3 spot. He's taken 67 innings. He's actually overtaken Babar Azam. If you look at that list, Hashim Amla is right at the top, fewest amount of innings to 3,000 runs, 57. Uske baad Shea Hope hai at 67, and then you've also got Fakhar Zaman on 67. काफी फखर की बात है। You've got to say that it's a huge achievement for you know Fakhar Zaman. In fact, आपने जो शर्ट पहनी हुई है उस पे भी 3,000 लिखा हुआ है। ये यही बात है, यही लिंक है, या क्या इसकी स्टोरी क्या है? बिल्कुल, मैं तो जब चेंज कर रहा था तो मैनेजर ने शर्ट दे दी, कह रहे थे कि आपके 3,000 रन पूरे हो गए, और बिल्कुल यही वजह है। अच्छा, अम्मी गाइडेंस देती है, बच्चे भी, आई नो कि आपका बेटा भी जो है बहुत इन्वॉल्व होता है, वो भी गाइडेंस देता है या नहीं?
वो जब मैं 0 पे आउट हुआ था पहली बॉल पे T20 में तो तब उसके बाद जब मुलाकात हुई उससे तो फिर मैं उसको यहाँ पे ले आया। तो जब मैच पहले वनडे से आ रहे थे तो मुझे कहता है बाबा बस 0 पे आउट नहीं होना। आपने एक के साथ 2-2 0 लगा दिए। और एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आज मोहम्मद रिजवान जिस वक्त बैटिंग पे आए तो उससे उस वक्त आप जो स्ट्राइक रेट आपका बहुत ज़्यादा था, बट जब वो आए तो आपने थोड़ा सा एक बैक रोल ले लिया और उन्होंने उसको एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। ये जो रोल चेंज होता है ये अब आप लोग अंदर ही कर रहे हैं या बाहर से भी मैसेजेस आ रहे हैं क्या? क्योंकि इतने बड़े चेज में आपकी ये रोल शिफ्ट जो होता है, गियर शिफ्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए रिजवान ऐसा प्लेयर है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। वो अगर आप कोई फील्डर, क्योंकि 5 फील्डर अंदर होने का फ़ायदा भी बैट्समैन को ज़्यादा होता है और मैसेज भी यही आया कि मैं लंबा लेके चलूं। तो तब रिजवान ने बोला कि आप लंबा लेके चलो, सिंगल डबल करो, मैं जो है ना मैं रिस्क लूँगा। तो तब रिजवान जो है ना उसने, हमारा प्लान यही हुआ अंदर, रिजवान और मेरा यही अंदर हुआ कि वो रिस्क लेगा और क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और स्वीप शॉट आपने उनकी देखी होगी। तो बस ये इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबर, रिजवान और इमाम के साथ, क्योंकि ये लोग आप पे प्रेशर भी नहीं लाते। क्योंकि मेरा रोल, मिकी जब शुरू में भी कोच था, फिर मिसबा भाई जब आए, जो भी कोच रहा है, तो मेरा रोल यही होता है कि मैं तेज़ खेलूँगा, लेकिन ये लोग जो हैं ये मेरा काम और आसान कर देते हैं। काम इनका और आसान हो जाता है, इसीलिए ही इज रीच 3000 रन्स। ह्यूज थैंक यू टू यू फखर, एंड दैट वाज द स्टार अटैक। Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. All right, thank you so much फखर। ऑफिशियली हम आपको थैंक यू कह देते हैं। अम्मी से कहें नाराज ना होया करें, क्योंकि कभी ना कभी तो स्कोर हो ही जाता है। तो खुश होगी आज तो। आज तो बहुत खुश होंगी अम्मी, आज सब खुश होंगे, पूरा पाकिस्तान खुश है फखर से। थैंक यू सो मच टू यू। एंड सना, आप कहीं नहीं जा रही, आप इधर ही हैं। हम आपको थोड़ा और तंग करेंगे और मजीद बातें करेंगे, पर ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रीदर। व्हेन वी डू कम बैक वी आर गोइंग टू बी जॉइंड बाय ग्रांट एलियट। Back on the Inverix Solar Energy Pitch Side Show, and now I've been joined by Grant Elliott to talk about New Zealand. Mr. G, Grant or Mr. G, what do you prefer me calling? No, that's fine. Either or. Either or. You know, because last time I called you Grant, and you were like, "Have I changed now? What has changed now?" So, just want to make you comfortable. But great performance by Pakistan. New Zealand, we spoke about in the first one-day international, was short of runs. What happened today? Hey, listen, today was a positive. Today was a real positive. New Zealand went out there. We all thought that they were 20 to 30 runs short. They went out there and they actually produced the goods today. But what was positive was Daryl Mitchell. He backed it up. He backed his 100 up with another 100. With Kane Williamson out injured, maybe Daryl Mitchell is the answer to number 3. I think the way that he's played has been outstanding. And I think New Zealand have improved throughout this tour. They've just kept getting better and better. So today was a real positive. Today was a real positive, but is there any concern at all with regards to them conceding those amount of runs, or would you just put it down to the sheer conditions that they are facing? I think that these are batting conditions. I mean, you know, we've seen the batters, they haven't struggled. We missed Milne today. Milne was out. So, you know, one of those frontline bowlers, maybe with a little bit more pace. We played the all-rounder. It was tough for them out there. Sodhi was a positive, but I also think that you have to take your hats off to Fakhar Zaman. I think he played really well. It was an innings that was needed. If New Zealand had got 2 wickets and maybe taken their chance and caught Fakhar Zaman, they had 2 opportunities to catch him, maybe the result would have been different. Yeah, the fielding definitely has been something that's not been the best in this series so far by both the sides, and I think that's an area where they will both be looking to improve. One thing that hasn't disappointed us though is the fans turnout in Rawalpindi Cricket Stadium. Throughout, we've seen some brilliant crowds coming in. Let's find out from Mehak what they have to say. Well, I'm currently amongst the crowd in the stadium, where it's been a terrific performance from both the teams, with Pakistan coming out on top. And of course, it's been an absolute pleasure and a treat for the fans to watch this live. So let's go speak to the fans and ask them what a brilliant experience it was for them and how lucky they feel they were
to watch this match live. Obviously, इतना brilliant match हुआ. तो कैसा था आपका experience इसको live देखते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आज मैच देखने आया हूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत खुशी हुई. इतना ज़्यादा एक ये क्या लें कि जैली एक क्राउड को देखते हुए खूब एंजॉय किया फैमिली के साथ. आज मैंने पूरा मैच देखा तो बहुत खुशी हुई. बेसिकली मैं हूँ कराची से और ख़ास तौर पे आज ये ODI देखने के लिए मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मैंने बड़ा एंजॉय किया. फ़खर ज़मान ने इतनी ब्रिलियंट बैटिंग की, पिछले मैच में भी इस मैच में भी बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे रेट करेंगे? फ़खर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है. मेरे ख्याल से फ़खर को वर्ल्ड कप में भी इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए और फ़खर को हम इसी तरह देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त खुशी भी लाएंगे, वर्ल्ड कप भी जीत के लाएंगे इंशाल्लाह. हमारी उम्मीद है कि फ़खर इसी तरह खेलता रहे और हमें इंजॉयमेंट मिलता रहे. I've got a lovely family here present with me at the moment. तो बताएं कि आप लोगों ने आज का थ्रिलिंग मैच कितना एंजॉय किया उसको लाइव देखते हुए? It's really amazing. It's my first experience and it's really amazing. I really enjoyed a lot. So would you आप जाके फिर से एक मैच देखेंगी if you wanted to go? Yes, why not? Yes, why not? पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करें, आज हमने सेंचुरीज भी देखी, हाफ सेंचुरीज भी देखी दोनों टीम से, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है अगर वर्ल्ड कप के हवाले से देखें जो ऑब्वियसली इस साल आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारा प्रॉब्लम ये था कि जब 1-2 विकेटें गिरती थी तो हम बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते थे. अभी ये है कि वी कंटिन्यूसली अटैक, बेशक विकेटें गिरें लेकिन वी प्ले और नेचुरल गेम. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा ही है और इंडिया में हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे इंशाल्लाह. Well, thank you so much for speaking to us और आपने हमें अपनी बहुत अच्छी राय दी. But that's it from Rawalpindi Cricket Stadium. Over here, it was the last ODI and now the leg will be moving to Karachi and it's just been absolutely terrific, especially today's game. We saw big runs on the scoreboard, big chases, and Pakistan comes out on top and is 2-love up in the series now. And the rest of the games will be played in Karachi. So until next time, I will see you all in Karachi. Well, the fans are definitely excited, and I'm sure they've got many reasons to be excited about. Pakistan is leading the series 2-0. Fakhr Zaman scored a fabulous 100, but I think he got a bit of a pep talk at the start by Grant Elliott right next to us. Grant, what was happening there? We saw there was a chat happening between you and Fakhr. I mean, any tips being exchanged? I was actually talking to him about his career, and I said early on in his career that he struggled with the short ball, and he was talking to me about what he used to do and how he actually trained for that short ball, because I know he went to South Africa and South Africans actually peppered him. And then when he went back to South Africa a year later, they bowled 5 short balls to him, he said, and he hit all 4 of them for 4. So the way that he's developed his game, and obviously giving him a couple of hot tips on how to play this innings, otherwise he wouldn't have scored, you know, the 3,000 runs that he has. It's all thanks to G. Yeah, and being in the Lahore Qalandars with him and all of that, you know, basically he was just thanking me for his career. No, not really. But it's amazing what he's done. He's a fine player, and to see his stats now is just phenomenal. And it's great to see. I love seeing good people perform well and do well. So outstanding from him, and I'm just lucky to have played with him. Yeah, you're just a humble brag, basically. Humble brag. That's what it is, a humble brag. That's what we call such people. Anyway, Sana, Karachi. We're moving to Karachi. You know, the series is in Pakistan's favor. They're leading the series, but we know what happened in the T20s. Pakistan was sort of leading and New Zealand came back into the series. So it's important that they maintain some kind of consistency. Would you like to see any changes at all, or would you keep the same team? I think Pakistan was quite proactive with the changes this time. Even in the second match, they had 3 changes. So what that says about the mindset is that they won't have to make a lot of changes at the end. They can pick and choose whatever combination is working for them. So I do think they will be learning from what happened in the T20s and would like to finish it in the next game, the one-day series. But one thing about Fakhr Zaman, I think he kept speaking about it. Babar Azam is the only other batter in this current era who has made 3 consecutive centuries twice. So I do think he kept talking about it also, but the importance of having Babar with him while achieving this milestone, and that's what this team is all about. They are exchanging information, which is pretty good. Will we get to see Iftikhar Ahmed in action at all, because he is now in the squad? I do think the number 4, they have tried 2 people at number 4, Shan and Abdullah Shafiq. Yes, after one game you don't want to make
a lot of changes, but I do look like in the preparation for the World Cup, Rizwan can go at number 4 and maybe Iftikhar can come at number 5. Yeah, that is a good point, because remember, the World Cup will be played in India and you will need some extra spinners who have the ability to hit, which Iftikhar Ahmed pretty much fits that kind of role. Thank you so much, Sana, for your thoughts. Thank you so much, G, the humble brag, for your thoughts. It's always it's always great to have you both on the show. And we'll have a look at what we have next for you now. Which is pretty much another game of this Dafa News KFC series. It'll be on the 3rd of May, a couple of days off, and then we'll be seeing you in Karachi at 2:45 p.m. Yeah, it was a great game of cricket. Pakistan were obviously on the winning note. That's how they ended things. The crowd loved it. It was an absolute treat for them, watching back-to-back hundreds by Fakhr Zaman. But this is it from Pindi, really. Pindi, you've been absolutely phenomenal, but we'll be seeing you guys now in Karachi. Edged and taken. Iris Rose picks up the first. It's up and it's over. He's so good at this, Daryl Mitchell. Daryl Mitchell once again scoring his 3rd ODI 100 and a maximum. It was short, it was straight, it was quick, and that is the end of Imam. Down the wicket, smashed away by Fakhr. Absolutely superb from Fakhr Zaman. His 10th century in one-day internationals. 25th 50 in ODI cricket to go with his 17 centuries. What a player.